Good morning, students. This is the third day of numerical class, right? So note it, please. Question is very simple. I think in the last numerical day, we have already discussed one questions related with the same questions. There is one more questions. Calculate the work done in dissociate the system of three charges placed on the vertices of a triangle as shown in. मतलब dissociate का मतलब है कि suppose there are, you can just note it here. सपोज मेरे पास क्या है, तीन चार्जेस है एक ट्राइंगल के तीन कॉर्नर में. तो यहाँ जो चार्ज है इसको अगर मैं बाहर ले जाऊँ डिसोसिएटेड हो जाएगा. अगर मैं ये जो चार्ज है तुम्हारा इसको भी बाहर ले जाऊँ दिट इज ऑल्सो डिसोसिएटेड. इसको मैं बाहर ले गया. तो जब मैं बाहर ले जाऊँगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. इज इट राइट? हाउ मच वर्क डन आई हैव टू डू इट. इट इज सेम एज एक चार्ज को मैं उठा के यहाँ रखा, दूसरा को उठा के मैंने यहाँ रखा, तीसरा को उठा के यहाँ रखा. तो ये भी एक ट्राइंगल का पार्ट है. सो एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड द आंसर विल बी सेम. इज इट राइट? बट हियर द क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएटेड ऑफ द थ्री चार्जेस. वेरी सिंपल ना, पहले देख लेते हैं ना इसमें. सो हियर let's first draw one triangle and here is a charge q, there is a charge 4q, है ना, and there is a charge called 2q. 4q is minus, is it right? Minus and there is a what 2q. तो इसको एसोसिएट करने में कितना टाइम लगेगा. सो लुक एट हियर, व्हेन आई प्लेस अ चार्ज हियर देयर इज नो अदर चार्ज. जबकि वर्क डन में हमको फॉर्मूला में जरूरत पड़ता है इट्स के एंड दो चार्ज की जरूरत पड़ता है Q1 एंड Q2. सो इफ आई प्लेस दिस चार्ज देयर इज नो अदर चार्ज, दैट मीन्स नो वर्क डन. लेकिन जैसे मैंने 2Q को रखा, अब इन दोनों के बीच में एक वर्क डन नंबर 1 हो गया. सो लेट मी राइट वर्क डन नंबर 1 एंड चार्ज क्या हो गया, एक हो गया 2Q, अनदर इज व्हाट Q. And the distance between them is the side is given as the 10 centimeter. Three charges but is shown in the figure, है ना. फिगर में दिया हुआ 10 10 10. It's not written, so I think it's a 10 only. Is it clear? So here I will write what it is, 10 centimeter. You can convert into the meter by multiplying 10 to the power minus 2. Is it right? Okay. Similarly, when I place minus 4Q, there is one more work done. Let me write 2 and between them 3. So there are 3 work done. So when we write W2, I think W2 will be the K and it is W2 is 2Q and 4Q. So I will write first 2Q. After that in bracket, I will write it is 4Q. And distance between them once again 10. 10 into 10 to the power what? Minus 2. चलो ठीक है. And work done number 3, it's K, it's minus 4Q, so minus 4Q, is it right? And it's a Q and distance between them is once again 10. 10 into 10 to the power what? Minus 2. So there are 3 different work done. Is it clear? Add all to get the net work done, which they have done it here. Look at here. Here we go. So after getting this, the value of Q, it is given in the question 1.6 into 10 to the power minus 10. तो यहाँ पे place कर देना है इसमें, you will get the answer. Is it right? Look at here, minus 4Q, minus 4Q. Why we should put minus? Because it is a scalar quantity. Minus तो डालना ही है इसमें. Is it clear? Yes. Next question, very important. Can two equipotential surfaces intersect each other? No. The answer is, you have to say no. Why? Because if two field lines are intersect, it indicates that they are belongs to the different fields. Is it right? Between the two charges, there is only one field lines. Is it right? The other अगर आके intersect कर रहा है तो it means it is belong to the other system, which is not possible. Next question, number 2, Roman number 2. Two charges plus Q and minus Q are located at these two different points respectively. How much work done is moving a charge 7 से -3 में. तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसा है. Is it right?
the question is like something, so it is something XYZ की questions आ रही है ना, तो थ्री डिफरेंट एक्सिस आ गया है ना, एंड यू प्लेस द चार्जेस एस -2 यानी कि Z में आ गया, तो लेट मी कंसीडर द Z इज सपोज दिस इज द Z, लेट मी राइट हियर ऑल्सो इट इज Z, यू कैन टेक एनी टू एक्सिस नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 2 में है और यहाँ पे ये 2 में है, इसको हम लोग -2 बोलेंगे, दिस इज +2। ओके, अब ये तुम नाउ यू आर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 7 to -3 y axis, so let me take, sorry, x axis, let me take, this is x axis and this is the point of 7 and this is the point of what, -3। okay, very good। सो एक चार्ज को जब तुम यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचाओगे तो सॉल्व कैसे करना है, वर्क डन व्हेन इट्स मूविंग, एज आई टोल्ड लास्ट क्लास, वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन व्हाट इनिशियल, इज इट राइट। सो लुक एट द फर्स्ट देख लेते हैं इनिशियल की हालत, दिस इज अ चार्ज Q1 and here is a charge Q2 and let me take Q3, है ना, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वाई लुक एट, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्टेंस, सो बिटवीन दिस टू पहले तो हमको इनिशियल वर्क डन निकालना है, तो ये जो इनिशियल वर्क डन है ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ दो डिफरेंट वर्क डन हो जाएगा, ये हो गया वर्क डन 1, ये हो गया तुम्हारा वर्क डन 2। अब वर्क डन 1 में देखो Q1 और Q2 तो लिख लिया, अब ये जो है ना, ये देखो Q है, तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, लेट मी राइट हियर इट इज, इट्स, ये जो Q2 है, दिस इज Q2 इज Q and this Q3 is -Q, so magnitude is same, only the minus differ, distance is also same 2 2, so it means work done 1 यहाँ वाला और वर्क डन 2 दोनों सेम है, बट ये वर्क डन 2 जो है माइनस हो जाएगा, एंड दे बोथ आर सेम हियर, इज इट राइट, you can note it this W1, okay, let me write here W1 is equal to what, W2, एंड ये इक्वल की वजह से वर्क डन इनिशियल क्या हो रहा है 0, when I reach here then I will say this is work done final, work done final यहाँ पे, in the work done final again the distance this and what this, so this distance and this distance again they are same, like here the distances are same, the charges are also same, so again I will get work done final is also 0, so net work done is 0 totally। And student, if you are not clear, once again you can send back, I will give you the detailed structure and send it to you in the WhatsApp group, clear? Okay, for the next question, this is a homework for you, you can easily find, if it is not possible again I will ask to send the request, I will send it, okay, this is the question, please note it, go for the next question, is it right, here you have to find some, these also होमवर्क, दो होमवर्क दे देते हैं यहाँ पे, keep it in mind here, in -b please write down +5, sorry -5, +5 is यहाँ पे है, -5 है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक आ गया, ठीक है, प्लीज़ राइट हियर -5, नोट इट हियर, वीडियो को गौर से सुनो फिर देखो, है ना, बहुत कुछ मैं बताता हूँ बीच में, सो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इज इट राइट। अच्छा, now about this question, to uniformly charge parallel thin plates having charge sigma plus sigma, see you know sigma क्या होता है, surface charge density, right, मतलब charge by area, is it right, at a distance of d apart, sketch an equipotential surface due to electric field between the plates if a particle of mass m and a charge -q remain stationary between the plates,
Is it right? What is the magnitude of the direction of the field? है ना? So it's very simple question. दो चार्ज प्लेट है, देखो यहाँ पे प्लस सिग्मा है, प्लस इसमें ही नोट करना है, थोड़ा मिस्टेक है, माइनस सिग्मा में माइनस 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 आएगा. सो व्हाट हैपन इन बिटवीन द टू, है ना, इन बिटवीन द टू एक चार्ज पार्टिकल को रख लेते हैं इसमें, है ना. तो एक चार्ज पार्टिकल, व्हाट हैपन हियर इन द चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल में क्या आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक, यू नो दैट फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, क्यू ई एम जी, वेट बोल दिया है. चार्ज पार्टिकल इज सस्पेंडेड, है ना, बिटवीन द टू, रिमेन स्टेशनरी. वहाँ पे स्टेशनरी होने का कारण क्या है, स्टेशनरी होने का कारण यही है कि वो उसमें एक वेट है और वो फोर्स के बराबर है. वो फोर्स कौन बना रहे, द फोर्स इज क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एफ इज इक्वल टू एम जी. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट राइट? The direction field of direction of the electric field is vertically downward direction. Is it right? Because exact plane is so close, electric field due to plane is vertically downward direction. Weight of the charged particle would not be balanced. नहीं तो वो क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा. Is it right? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारा डाउनवर्ड नहीं होगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा. इट विल बी नॉट बैलेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड की तरफ है तुम्हारा. इज इट राइट? वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा. इसका मतलब है कि वेट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव से रिपेल हो रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि अपवर्ड की डायरेक्शन में. इज इट राइट? दे मे आस्क द क्वेश्चंस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेट. इज इट राइट? सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. इज इट क्लियर? वंस अगेन पार्टिकल देखो माइनस है, यहाँ दिया हुआ है, इट्स गिवन इन दैट माइनस क्यू. तो माइनस जो है वो प्लस की तरफ जाएगा और इस माइनस से वो रिपेल हो जाएगा. एज आई टोल्ड दिस इज नेगेटिव. वेट हो गया ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डाउनवर्ड. तभी तो दोनों क्या हो रहा है, आपस में बैलेंस बना रहे हैं. इज इट क्लियर? एंड यू नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ये हमने सेकंड क्लास में हमने डिफाइन किया था जब नोट्स डिस्कस कर रहे थे. थैंक यू स्टूडेंट.